Hi guys, hope you all are doing great and welcome back to my channel once again. So today I'm gonna be sharing a super quick video with you all and that's gonna be really helpful. So today I have a bunch of dirty and used beauty blenders, and all these things need cleaning very much. Like, as you can see, you should never ever use dirty blenders or dirty brushes because it can lead you to any kind of fungal infections. It can lead you to acne, breakouts, pimples, what not. So do not forget to clean all of them. So I will just quickly show you how to clean them quickly and get rid of all the dirt. So without wasting any more time, let's get into the video. So guys, I may look very exhausted now, but successfully cleaned all of them. सारे क्लीन हो गए. As you can see, ये काफी लाइट कलर्स थे तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं. But one thing I would really like to mention, जो कि ऐसे हो सकता है कि कुछ ब्लेंडर्स में ऐसे स्टेन्स रह जाए. So don't need to worry about that. See, कुछ में ऐसा हो सकता है कि स्टेन्स रह जाए. Why? Because ये हो सकता है कि आपने काफी टाइम से इस ब्लेंडर को क्लीन नहीं किया हो. You haven't washed it for really long. तो कभी ऐसा हो सकता है. इससे कुछ में ऐसा हल्का स्टेन्स रह गया है. So don't need to worry about it. हमने जब भी इसको माइक्रोवेव में डाला तो ये सारे मेकअप को ऐसे मेल्ट कर देता है, so that आपको क्लीनिंग में इजी हो. सी, जब भी आप इसको स्क्वीज करो, यू जस्ट नीड टू सी कि प्लेन वाटर निकले, वैसे सोपी वाटर ना निकले या फिर कोई भी ऐसे मतलब कलर्ड वाटर ना निकले. अगर नहीं निकल रहा है तो आपने सक्सेसफुली आपकी ये जो ब्लेंडर्स है इनको क्लीन कर लिया है. नाउ यू कैन यूज इट. और एक बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी. आई हैव अ ब्लेंडर हियर विथ मी. इसको मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि आप देख सकते हो कुछ ब्लैक डॉट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे हल्का फुल्का. और एक जो क्लीन करते हुए मैंने देखा उसमें भी ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे डॉट हो गया है. ये फंगस है तो आपको ये ब्लेंडर्स फेंक देनी है. इसको आपको यूज नहीं करनी है फर्दर. इससे आपकी स्किन को बहुत खराबी हो सकती है. So guys, that's it for today's video. I hope you liked it. This was helpful, and if yes, then do not forget to let me know in my comment section below. Like this video, share with your friends, family and everyone. So I will see ya in my next video. Till then, take care. Bye bye.